Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome again to Doosra View. This is episode 12 of Doosra View podcast. आज बड़ा स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि पहले डेब्यूटेंट है हमारे मुआज़ काजी क्रीज का आज खेलने और अनफॉर्चुनेटली जाजिम और अदनान इस वक्त रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. अदनान स्पेशली ही वाज नॉक्ड आउट, वो उठ नहीं सके, तो अगले पॉडकास्ट के पार्ट में वो हमें ज्वाइन करेंगे ऑन द वीकेंड जब हम इस टेस्ट के आखिर में पहुंच रहे होंगे और उस वक्त क्रंच टाइम होगा. लेकिन आज हम इस टेस्ट को शुरू करेंगे. उससे पहले मुआज़ को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आप सारे लोगों से. मुआज़ मेरे दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका और he's played under 19 cricket before और even वो men's senior team के लिए रिप्रेजेंट किया था UAE को and he toured बांग्लादेश for the T20 World Cup. तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी क्रिकेट देखी, तो टेक्निकल एस्पेक्ट भी आ जाएगा थोड़ा आपके पास और इनके व्यूज़ थोड़े डिफरेंट होंगे अदनान और मेरे से. तो इसके साथ ही मुआज़ आपके पास कुछ ऑडियंस काम कर दें, बस हाय कह देना. Assalamu alaikum everybody. My name is Waz. As Musa introduced, happy to be on the channel. I've been following cricket for a long time, since I was, I guess, born, because my dad's been playing cricket, and so it's a fun way for me to express my ideas. Or मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग will like my ideas. They might not always be the popular ones, but they are my ideas, and I hope you like them. बिल्कुल बिल्कुल. इसके साथ ही आपके आइडियाज देखते हैं. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला मैच पोस्ट पैंडेमिक है. एवरीबॉडी इज एक्साइटेड फॉर इट. लेट्स गो टू द प्लेइंग 11. हियर आवर म्यूजिक. ओके गाइस, सो अब तरतीब होगी कि हम पोटेंशियल प्लेइंग 11 को रन डाउन करेंगे और उन प्लेयर से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे इंडिविजुअल प्लेयर से, उनको हम बस ब्रीफली बताएंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर सकती है उनसे, और उसके अलावा इंग्लैंड की टीम के बारे में बात करेंगे और आखिर में अपनी प्रेडिक्शन देंगे फॉर द मैच. तो इसके साथ ही मुआज़ अपनी टीम पे चलते हैं. दो अपने प्लेयर हैं, उनका तो कोई शक नहीं है, शान, मसूद और आबिद अली. Absolutely, not a doubt. How do you rate them? I would say Shan Masood काफी अच्छा खेल रहा है आजकल. He's काफी mature हुआ last year से. I remember when Jimmy Anderson made him his bunny basically. 6 matches, I think 6 innings, 57 runs. That's not a lot. So I think this time Shan Masood's really improved a lot in his batting. Even जो भी practice games हुए हैं, काफी इसने अच्छा किया है. So we're expecting good runs, and he's, I think, a senior member of the team now. The way he carries himself. Potential future captain, they're saying, right? Yeah, they've been saying. I've heard a lot of talks. So who knows? Shan Masood might have to step up. And Abid Ali, we all know his talent. First man ever to score 100 on ODI debut and on his test as well. So I have high hopes from him. Stroke maker, अच्छा खेलता है. He's not scared. So it should be a good matchup with the England Quicks and these two openers. और अब मैं बस शान मसूद के ऊपर कमेंट कर देता हूँ. बहुत इंप्रूव प्लेयर है, लेकिन दिस इज द रियल टेस्ट फॉर हिम. मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म कर लिया, ही इज अ शो इन फॉर द फ्यूचर कैप्टनसी. मुझे लगता है बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर आ जाए उनके क्रिकेटर के साथ काफ़ी अच्छा. और आबिद अली इज माई फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान राइट नाउ. हालांकि बड़ा जल्दी उनकी शुरुआत हुई है, लेकिन ही हैज़ द बेस्ट कट शॉट. स्पिनर को कट मारते हैं वो, और इंशाल्लाह इस मैच में दोनों बहुत ओपनर में अच्छी परफॉर्म करेंगे. उसके बाद अजहर अली, बाबर आजम. Azhar Ali, we all know he's, I think, very close to, I think 6,000 run होने वाले उसके काफी close है. So I think he's proved his mettle over the years. He's a good player. He's a stable player. He holds down one end, and I think that's all he needs to do for us. Exactly. Stay on the crease, hold that end, because we have हमारे पास काफी stroke makers हैं, But Azhar Ali एक है बंदा जो he will stay there. He will face 500 balls if he has to, and he won't get out. That's the hope. And Babar, I mean, we don't have to say much. I mean, people were saying the Fab 4 should be extended to the Fab 5, or maybe the Fab 4 excluding Joe Root and including Babar Azam. So we all know his pedigree, one of the best players. So hoping a lot of runs. तो यही बात है कि इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान की बहुत डिपेंडेंस है, बैकबोन है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये परफॉर्म करें. अगर उन्होंने ना परफॉर्म किया तो दोज बैटिंग अराउंड देम आर बाउंड टू फॉल्टर, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में, बिकॉज वी हैव स्कोर हाई स्कोर एटलीस्ट 300 तो बनाना पहली इनिंग्स में. उसके बाद आते हैं असद शफीक पे, और असद शफीक पे जल्दी आ जाते हैं. उसके बाद उनकी एक बहुत मिक्स्ड ओपिनियन आ रही है, किसको खिलाना चाहिए असद शफीक के बाद. Asad Shafiq, we know he's a good lower order batsman. अच्छा खेलता है नीचे आके. कि I think he's good enough to even be a number 3. लेकिन उसकी जगह नहीं बनती अभी. So he's settled for number 5, which I don't think is a bad position at all. He's played a lot of rear guard innings, especially in Australia. Yeah, when the top order might fail, you don't know with Pakistan. Asad Shafiq holds down one end. So I think he's
He's a very important cog in the middle सही order. फौजी है हमारा, सही बात कर रहे हैं आप। तो सही उसके है। बाद आते हैं फवाद आलम। आप बड़ी देर से फवाद आलम की तबसरा चल रही है, फाइनली गेट शॉट, लेकिन क्या उन्हें इस मैच में बारी मिलेगी, आपको क्या लगता है? तो Fawad Alam, he's someone I feel for. Ketana, he's grinded, he's run, he's he's gone through the ringer in domestic cricket, you know. So century on his test debut, and since then nothing. I mean, that's nothing. You know, I don't think that's something that should have happened to a player of his caliber. But regardless, he's back in the squad now. But then again, there's a twist where Misbah says कि उसको 2 spinners खिलाने हैं. You know, तो 2 spinners, एक तो यासिर शाह of course है, तो दूसरा शादाब है. So we all know Rizwan is playing as well. He's the keeper. So if Shadab is playing, you will want Rizwan to go above Shadab. आप शदाब को खिलाएंगे या आप फवाद को खिलाएंगे? क्योंकि वसीम अकरम ने कहा है कि you don't want to go in with a batsman less. I will play in England first Test match. I will play for Fawad Alam. You will play Shadab. Fawad. I will. Shadab Khan, I just checked his scores in the 2 practice games. Yeah. I think in one of the innings, 0 wickets, 103 runs. I don't think those are any figures to be even considered to be in the playing 11. So Fawad Alam, I think he has a good chance. And I mean, our bowlers are more than capable enough. ठीक है, मैं खुद ही चाहता हूँ फवाद आलम को खिलाएं, लेकिन अगर शदाब खान को खिला रहे हैं तो शदाब खान की हमारी डिपेंडेंसी होगी कि बोल दोज ओवर्स जो बीच में आएंगे, जिसके टाइम मतलब 3 बॉलर्स हमारे खिला रहे हैं, शाहीन, नसीम, अयान। अब्बास थक जाएगा तो यासिर शाह कितनी देर तक बॉलिंग करेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है इस वजह से खिला रहे हैं। प्लस रेन की बहुत बात हो रही है, मैं फोरकास्ट चेक किया था, एक ही दिन रेन एक्सपेक्टेड है कल, उसके बाद क्लियर आउट हो जाता है, तो मुझे लगता है वी विल हैव अ रिजल्ट फॉर दिस मैच, वी हैव टू गो इन फॉर द विन। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं। फवाद आलम पता चल जाएगा खेलते हैं नहीं कर, कब तक हम इंतजार करेंगे उनकी बैटिंग क्रीज में आने के लिए। तो फवाद आलम के बाद कौन आते हैं? मोहम्मद रिजवान। He's gonna play, of course. He deserves to play. I'm a big fan of Rizwan's. Big fan. Good keeper, solid test batsman, और fit. Athlete. An athlete. और उसके बाद हमारे पेसर्स पे आ जाते हैं। बल्कि यासिर शाह हमारा बैट्समैन ऑलराउंडर, यासिर शाह खेलेगा 100 in Australia. 100 in Australia अभी तो he's a batsman. I'll say he's an all-rounder. हाँ सही बात है यार। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पेसर्स हैं, अल्लाह करे वैसे यासिर शाह अच्छी बॉलिंग कराए, उसको बड़ी देर से प्रेशर चल रहा है, he's not been performing, प्लस हमें स्पिनर को नहीं लेके गए, इवन इन द 29 मैन स्क्वाड कोई अच्छा स्पिनर नहीं ट्रॉफी से हमारा, that was sad। तो अब यासिर पे आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई होप ही डज परफॉर्म, ही डज गिव बैक। उसके बाद हमारे पेसर्स आते हैं। पेसर्स की कमाल बात ये है कि हमारे पेसर्स हिस्टोरिक, मुझे लगता है दे परफॉर्म वेल इन इंग्लैंड एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग कंडीशंस हैं, लेकिन हमारे वो बाउंसी बॉलर्स नहीं है, शोएब अख्तर वहाब हैं। तो उसके साथ शाहीन, नसीम और ये अब्बास मुझे लगता है बहुत थ्राइव करेंगे इन कंडीशंस में। I think ये जो 3 fast bowlers हैं, I'm excited to watch these guys bowl, honestly. Naseem Shah on a English wicket, I can't wait to watch him bowl. Conditions, right? 145, it's crazy. And then on the other side, you're like, for example, if Abbas is bowling, he's gonna knock you with line and length. He's gonna come at you every day like a horse, same place. And you're like, I get some rest with who? Shaheen Shah Afridi. He's not a mug. He can bowl. Then who? Naseem Shah. There's no rest for anybody. They're gonna keep coming at you. Yeah. So who's the match changer for you? Just name one match changer for you. जो तुम बोल रहे हो कि ये मैच पाकिस्तान के लिए बंदा पलट देगा. Could be a batsman, could be a bowler. I would say Shaheen Shah Afridi. He's underrated as a bowler. I would say he bowls very well. His Yorkers, I would say if he can give us a good opening start, we'll be set. I want to say Babar Azam, but that's everyone's first answer. I'm just gonna go with bias. ठीक है, bias के साथ मैं जाऊंगा आबिद अली के साथ. ठीक है, आबिद करके दिखा दे, जगह बना ले अपनी. राशिद लतीफ कहते हैं पहले तो आने नहीं दी आबिद अली को, अब आबिद अली टीम में आ गया तो उन्हें कुंडी लगा लिया. यार हमारे एक्सपर्ट्स भी ना बहुत ही opinionated ही हैं, और opinions change होते रहते हैं like the wind. They keep going here and there. इसका मकसद ये था कि now he's not gonna go anywhere. He's gonna stay in the team for sure because he's gonna make sure he's in the team for now. So honestly, if you want to cement your spot in the team, score in England, and you'll be good for a while.
इंशाल्लाह। तो इसके बाद इंग्लैंड की टीम पे आ जाते हैं ब्रीफली, उसके बाद हम प्रेडिक्शन पे चले जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड की टीम में हु डू यू फियर कि बंदा यार ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम फैंटी लगा सकते हैं, हम इनको टफ टाइम दे सकते हैं। वी आर द सुपीरियर टीम इन माय बुक, और उनकी बैटिंग स्पेशली हमारी बॉलिंग के सामने एक्सपोज हो सकती है। I think कि जो दो हैं, they're Joe Root and Ben Stokes. Yeah. They're right now the mainstays of the team. The other four top six, Dom Sibley, Rory Burns, Ollie Pope, and Josh Butler. They're batsmen, but they're stroke makers, and they're very, I would say, susceptible to getting out. Especially if you see Dom Sibley and Rory Burns opening the batting. I think they're good, but they move around a lot. Alright. They're बात कर रहे हैं सिबली के बारे में, तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने तो आउट भी किया हुआ है। जब अंडर 19 के लिए ये लोग आए हुए थे UAE, तो they sent an England team before we played a tri series with Pakistan, England, and UAE, and that we had people like Imam ul Haq played as well. You know, some years we played with these guys, and England had Dom Sibley. They had other guys as well, Joe Clark, Ben Duckett. So we played with these guys, and yeah, I mean, I got Dom Sibley out, which, you know, it was good in that game. But you know, it's good to have little. कर लिया, हमारे शाहीन भी कर लेंगे, इशू कोई भी नहीं है। डर नहीं है, पाकिस्तान is gonna come hard in this match. इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो बबल बना हुआ था, it's gonna work in our favor, क्योंकि हमारे बॉयज को इतना कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम मिले आफ्टर, इट्स लाइक अ बूट कैंप जैसे मिज़बान ने इतनी देर से इकट्ठे हुए हैं, ऑल क्रिकेट, एंड बाबर आजम तो मुझे लगता है पागल ही हो जाएगा रन बना के इसके बाद की। और एक ये है कि there's not been a lot of gossip. It's all been cricket from Pakistan's camp. Yeah. It's only been, you know, usually there comes the whole Pakistan tour, or some issue will come up that's off field that will be a big issue back home, but right now they're professional, you know. इसके साथ ही बस अब चलते हैं, अब थोड़ी देर घंटों में मैच शुरू होने वाला है, so let's just give our prediction quick. मुझे तो पता ही चल गया होगा साउंड में prediction किस तरफ जा रही है, लेकिन मुआज़ I would say Pakistan has the upper hand right now because they're like unpredictable for now, because this is the first game. We don't know what to expect from them. I mean, practice game is जो उन्होंने किया है, but practice game is never the real game, you know. कि ये bowlers ने bowl किया है, they bowl well in the practice game, but bowling in a test match is different to English batsmen. So I would say first test match goes to Pakistan, not easily, but it would be a good game. All right. So if we bat first, I think we will win easily, क्योंकि they'll be batting last, और spinning wicket होगी अगर, क्योंकि मतलब दो स्पिनर करते हैं और चौथी इनिंग उनके लिए इजी नहीं होगा। लेकिन I don't know why my gut feels कि हम कल पहली बॉलिंग करा रहे होंगे, उस सेंस में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, but I'm still gonna go with Pakistan inshallah, and we should stay positive. So we're just gonna leave the audience to watch the match now. उससे पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले I just hope that you guys you know, are eagerly watching the game. It's been a long time since we watched Pakistan play, you know, काफी देर हो गई है, and I've not been this excited for a Pakistan team to play for a long time. There's young bowlers, they're quick bowlers. I'm excited to watch some quick bowling, some nipping bowling. ये बात बड़ी देर बाद एक्साइटमेंट आई बढ़ रही है, बड़ी देर बाद स्टार्स बनने का पोटेंशियल नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी देर बाद बैटिंग थी, लेकिन इंशाल्लाह इसके साथ ही आगे जाएगा। And I don't know if it's just you, but I kind of like the biosecure bubble with no crowds right now, because game को और intense हो जाता है. You're only focusing on the game. Yeah. Which is an added, I guess. Yeah. लेकिन जो fans नहीं होंगे ना, मेरे लिए बहुत बड़ा, because I love the fans reacting to the shots, to the हर चीज. I'm gonna miss that. उसके अलावा that's gonna suck actually. उसके अलावा सारे चीजें मजा आएगा मैच, we'll see some good cricket. तो इंशाल्लाह next time मुआज़ आप भी ज्वाइन करेंगे, हम पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह, साथ ही अदनान भी होगा हमारे साथ. We'll close the match together. Days probably on Saturday. We're gonna do the next part. So until next time, take care and assalamu alaikum. And thanks guys, hope you enjoy the match, and Allah Hafiz.